Hey guys, welcome to our classroom. The mouse and the pencil. One day a little mouse was looking for something to eat. He found a pencil. I am going to bite you, said the mouse, and he bit it hard. You are hurting me, said the pencil. Let me draw you one last picture, and then you can do what do you like. Very well, said the mouse. The pencil drew a big circle. Is that a cheese? Asked the mouse. We'll call it a cheese, said the pencil, and it drew three little circles inside the big one. That's an apple, squeaked the mouse. Let's call it an apple, said the pencil, and it began drawing some funny carved things near the second circle. Why, those are cucumbers, said the mouse, licking his lips. I wish you'd hurry. I simply can't wait to get my teeth into them. The pencil drew two little triangles on the top circle. Oh, squeaked the mouse. Now you have made it like a cat. Don't go on. But the pencil went on till it had drawn long whiskers and a mouth on the top circle. And the mouse cried out in terror, "It's a real cat! Help!" Now see if you can draw a cat that looks real enough to frighten away the mice. एक दिन चूहा कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। तब उसे एक पेंसिल मिली। तब चूहे ने कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पेंसिल ने कहा, मुझे छोड़ो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। फिर उसने कहा, मुझे एक आखिरी पिक्चर ड्रॉ करने दो। चूहे ने कहा, ठीक है। पेंसिल ने एक बड़ा सा सर्कल बनाया। चूहे ने कहा, क्या ये चीज़ है? पेंसिल ने कहा, हाँ चलो चीज़ मान लो। फिर उसने तीन बड़े सर्कल बनाए। फिर चूहे ने कहा, क्या ये सेब है? पेंसिल ने कहा, चलो सेब मान लो। चूहे ने कहा, क्या ये कुकुम्बर है? कुकुम्बर यानी खीरा? जल्दी से बनाओ, मैं इसे खाना चाहता हूँ। फिर पेंसिल ने दो ट्रायंगल टॉप सर्कल पे बनाया। चूहे ने कहा, ये तो बिल्ली जैसा दिख रहा है, आगे मत बनाओ। लेकिन पेंसिल आगे भी बनाया और वो कैट बाहर आ गया और चूहा दौड़ के भाग गया। क्या तुम बिल्ली बना सकते हो जो चूहे को डरा के भगा दे? डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड्स। कैट यानी बिल्ली के बारे में कुछ बताओ। लेट्स मेक अ पेंसिल कैप।